Good morning, students. As you know that in half yearly exam, 3 chapter is coming. That is our first chapter. That is chapter number 11, force and pressure, friction, and third is sound. We have already revised the chapter sound, though we have already revised in PT1 force and pressure and friction, but again I am revising the chapter force and friction for all of you. So first of all, when we are talking about the force, so force is what? It is a push or pull, and we cannot see the force. Only we can feel the force. We can feel the force. We cannot see the force. Means we can see the effect of the force. Okay? And when we are talking about the force, the SI unit of force is Newton. What is the SI unit of force? The SI unit of force is Newton. Means force को किसमें measure करते हैं? We measure in SI system. Force is measured in Newton. और इसके जगह न्यूटन की जब बात करते हैं तो सेकेंड थिंग कि फोर्स दो तरीके के होते हैं. वन फोर्स इज बैलेंस फोर्स एंड अदर टाइप ऑफ फोर्स इज अनबैलेंस फोर्स. तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स. If the force is acting on an object from equally from all sides, means we can say that if we are applying a force, a block is kept here, and if one person is applying a force of 50 Newton in this side on this block, and other person is applying same force of 50 Newton on this side, on this block, so what will happen? This block will not move from its position. This block will not move from its position. Okay, means the resultant force will be how much? The resultant force will be 0. So balance force is a type of force in which the resultant force is equal to 0. So when we are talking about the balance force, if the resultant of a force is 0, then that type of force, if the resultant of a force is 0, it is said to be, in simple word you can write, it is said to be balanced force. Okay, and second, unbalanced force. This I am dividing the force in two categories upon the amount of force which is applied on an object. If the resultant of a force is not equal to 0, it is said to be unbalanced force. It means what? Suppose that there is a block again, and one person is applying a force of 50 Newton on this block, and other person is applying a force of 40 Newton on this block. So what will be the resultant force? The resultant force will be, we can add F resultant will be 50 minus 40, that will be how much? 10 Newton. So resultant force कितना होगा? 10 Newton, and block will move in which direction? In the direction in which the force applied is more.
So the amount of force which is applied, depending on that, the object is considered as we consider force as two type of force: balanced force and unbalanced force. Okay, in the case of balanced force, means that is only when we say that the balanced force means we can say that the external force which is applied on the object is zero. And in the case of unbalanced force, this is the unbalanced force which has many effects. Means we say that a force may change the speed of an object. Force may change the speed of an object. So if I am saying that force may change the speed of the object, which kind of force can change the speed of the object? If the force is balanced, it means the object, if it is moving with the uniform speed, it will continue with the same speed. So if I am saying that a force may change the speed of the object, means I am applying a external force. अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और वो रेस्ट से मोशन में आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट में मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ उस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज अनबैलेंस फोर्स. Which type of force? Unbalanced force. I am applying which type of force on that object? I am applying unbalanced force on that object. And due to which what is happening? The object which is at rest may come in motion. Second thing, there is a thing that whenever any object is moving, see, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो मूव करते करते वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाता है. मूव करते करते वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? रेस्ट पे आ जाता है. हम लोग कभी अगर इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फिर से जमीन पे आके गिर जाता है. इफ वी विल टेक टू मैग्नेट and if we bring near to each other, so what will happen? In this case, what will happen? If the pole will be same, they will repel each other, and if the force will not be same, they will attract each other. So इस सब पे हम लोग फोर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? फोर्स में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स एंड अदर इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. तो फोर्स को कैसे कितने कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? दो कैटेगरी में. फोर्स कब एक्ट करता है? व्हेन देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज. और फोर्स एक्ट करने के लिए कितनी बॉडीज की जरूरत पड़ती है? दो बॉडीज की. लेकिन अब दो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, एक तरीके का फोर्स वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स in which the force will come into play when two objects are in physical contact with each other. If two objects are in physical contact with each other and a force is acting on an object, that type of force is said to be contact force. Means contact force कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं. जैसे फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स. यस, मीन्स इस मस्कुलर फोर्स में क्या है कि अगर हमें डोर को कोई पुश या पुल करना है तो माई हैंड विल बी इन कॉन्टेक्ट विद दैट डोर. फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है? इफ इन द केस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, if any object is moving, if an object is moving, तो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसको अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन. लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव करता है वो किससे कांटेक्ट में होता है? विद द सरफेस. सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स. जब दो बॉडी एक दूसरे के इंटरेक्शन में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोनों बॉडी मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में ना हो. When two objects are not in physical contact with each other, and then also a force exert between these two bodies.
force exists, that type force is said to be non-contact force. For example, क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. Yes, so these all are the example of non-contact force. Okay, so for today, what topic I have taught, read that topic. In the next class, I will discuss about the chapter force and pressure remaining part. Thank you. God bless.